દિલ્હી વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં આમ આદમી પાર્ટીનો મોટો ફટકો પડ્યો છે। દિલ્હીની ચૂંટણીમાં ભાજપની ભવ્ય જીત થઈ છે। ચૂંટણીના સામે આવેલા પરિણામ અને ભવ્ય જીતની ભાજપમાં ખુશી જોવા મળી હતી। દિલ્હી ચૂંટણીમાં ભાજપની ભવ્ય જીત અંગે ભાજપ અધ્યક્ષ CR પાટીલે પત્રકાર પરિષદ યોજી હતી। પત્રકાર પરિષદમાં રાજ્ય ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવી, સાંસદ મુકેશ દલાલ, વન પર્યાવરણ મંત્રી મુકેશ પટેલ હાજર રહ્યા હતા। CR પાટીલ પત્રકાર પરિષદમાં જણાવ્યું હતું કે ચૂંટણી લડાતી હોય અને જીતાતી હોય છે। ભારતીય જનતા પાર્ટીની અનેક ચૂંટણી હારી છે, पर 27 वर्ष बाद दिल्ली चूंटणी जीती है। दिल्लीना लोको स्वतंत्र थई गया तेवुं वातावरण बन्युं। आ लोकोने झाकारो आपवो जोईए तेवी लागणी देशना लोको अनुभवी रह्या छे। सौनी अपेक्षा अने लोकोनो विश्वास जीती आ चूंटणीमां विजय मेळव्यो छे। कोंग्रेस अने आपना पार्टीओ सफायो रह्यो छे। आ घमंडी लोकोने झाकारोने बहार काढवामां अमे सफल रह्या छीए। दरेक राज्य अने देशना भाग छे। दिल्हीनी जीत बतावे छे के घमंडीओ चेलेन्ज करता हता के आ जीत तमे नहीं मेळवी शको। लोकोए आई पार्टीने ओळखी बतावी के दिल्हीना लोको भारतीय जनता पार्टीने जीत अपावी। दिल्लीना लोकोए पीएम मोदीना हाथमां भविष्य देखायुं छे। विश्वास अने भरोસો રાખી જીત અપાવી છે, જે બદલ દિલ્હીના લોકોનો આભાર માન્યા। દિલ્હીના લોકોને છુટકારો મળ્યો। સરકારની યોજનાનો લાભ દિલ્હીના લોકોને મળશે। મધ્યમ વર્ગના લોકોને પણ લાગે છે કે ભાજપ માત્ર મત માટે નહીં પરંતુ દરેક વર્ગના લોકો સાથે લઈને ચાલનારી પાર્ટી છે। 12 લાખ સુધીની આવક પર ટેક્સ રાહત આપવામાં આવી, જેને કારણે નોકરિયાત વર્ગની બચત થશે અને જીડીપી ગ્રોથમાં પણ વધારો થશે। સત્તા પ્રાપ્ત કરવા માટે ચૂંટણી લડીએ છીએ। सत्ता मेळवणी साथे लोकोनी सेवा करवा चूंटणी लड़ीए छीए। अरविंद केजरीवालना ठाला वचनो ने कारणे लोकोनो विश्वास डगमगी गयो। शिक्षणनुं स्तर नीचुं गयुं। यमुना नदीना कोई विकासना कामो करवामां आव्या नहीं। 27 वर्ष पछी भारतीय जनता पार्टीए सौनी अपेक्षा प्रमाणे तंदुरस्त हरीफाई करीने लोकोमां विश्वास उभो करीने आ जीत मेळवी छे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहेबे आखा एमनो जे अश्वमेघ यज्ञ जे आखा देश में फरी रह्यो छे, एमां जे 3 राज्योना छेल्ला इलेक्शन एनी अंदर आपणने जे जोवा मळ्युं छे, राजस्थान हशे, हरियाणा हशे, महाराष्ट्र हशे, मध्यप्रदेश हशे अने दिल्ही, आ दरेक जग्याए जे रीते कोंग्रेसनो सफायो थयो, आप पार्टीनो सफायो थयो अने आ घमंडी लोको एमने आजे जाकारो आपवामां, एमने बहार काढवामां सफल रह्या छे। मोदी साहेब क्यारे जूठा वचनो आपता नथी। एमनी अनेक योजनाओने 100% लागू करवा माटेनो एमनो प्रयत्न होय छे અને સફળ કરવા માટેના પણ એમના પૂરતા પ્રયત્નો હોય છે, જે સફળતા પણ પામે છે। કોઈ ખોટી લાલચ આપ્યા વગર તંદુરસ્ત હરીફાઈ કરીને એક રાજ્યને નહીં પરંતુ આખા દેશને સાથે લઈને આગળ વધવા માટેનો એમનો પ્રયત્ન છે। દરેક રાજ્ય આ દેશનો ભાગ છે એવી ભાવના દરેક મતદારોના મનમાં ઊભી કરીને ये जीत हासिल करता होय छे। आज आ दिल्ली नी जीत एज बतावे छे। जे घमंडी एना आज विडियो सोशल मीडिया में फरे छे कि चैलेंज करता था कि आ जन्म में तो तमे दिल्ली में अमने हरावी नहीं सको, बीजो जन्म लेवो पड़शे। आ जन्मनी अंदर एमने सत्ता परथी जवुं पड्युं। जे 99 सीट लोकसभा में जीती ने 543 में जब 99% मार्के पास थयो होय ए प्रकारनो भ्रम पैदा करवाना नेतानो पण एमनी पार्टीनो खातो पण नथी खोल्युं। कदाच आखा देश में जो नेशनल पार्टी हती एनो एक पण सभ्य न होय एवा जे सौथी वधु राज्यो आज आपणा देशनी अंदर छे અને એ જ બતાવે છે કે લોકોએ આટલા વર્ષના પારખા પછી એમને પણ ઓળખી લીધા છે। મોદી સાહેબમાં અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના વિચારધારામાં વિશ્વાસ રાખીને દિલ્હીના મતદાર ભાઈ બહેનોએ જે રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટી આજનો દિવસ એ ખૂબ ખાસ છે। आज का दिन ये अपने आप में एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज दिल्ली वालों ने देश का दिल जीत लिया है।
दिल्ली वालों के दिल में भी मोदी, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हर राज्य में जहां मोदी मोदी के नारे गूंज रहे हैं, मोदी जी के अगुवानी में देश एक नई सफलता हासिल कर रहा है, तब आज दिल्ली के लोगों ने दिल से मोदी जी के शासन को, डबल इंजन सरकार के शासन को लाने के लिए एक ऐतिहासिक मतदान तो किया। जो रुझान सामने आ रहे हैं वो भी ऐतिहासिक है और आने वाले दिनों में दिल्ली को भी एक ऐसी सरकार से मुक्ति मिलने वाली है जिसने देश की सेना पे प्रश्न उठाया, ये देश की सेना के काम पे, सेना के जवानों पे, ये देश की आस्था पे, हर एक विषय जिससे लोगों की आस्था जुड़ी थी वो सभी विषयों में प्रश्न खड़े किए, बदनाम किया, जिसने देश के प्रत्येक नागरिकों को कहीं ना कहीं दिल दुबाया। ऐसी सरकार से आज दिल्ली के लोगों को मुक्ति मिलने जा रही है। भाइयों, देश की डबल इंजन की सरकार के साथ साथ अब दिल्ली की लोगों को भी ये डबल इंजन सरकार मिलेगी। जिस प्रकार से देश के प्रत्येक गरीबों को आयुष्मान भारत हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, सभी योजनाओं को लाभ मिल रहा है, उसी प्रकार से अब दिल्ली वाले को भी यही लाभ अच्छी तरह से मिलेंगे, नीचे तक मिलेंगे और जो बोलेंगे वो करेंगे। वही दिशा में दिल्ली के लोगों के साथ आने वाले दिनों में आगे बढ़ेंगे। आज दिल्ली वालों ने दिल देश भर के लोगों का जीता है। ये खुशी मात्र दिल्ली में नहीं, मैं देख पा रहा हूँ, सुबह से मैं कई चैनलों पे देख रहा था, कई कश्मीर में तो कई कन्याकुमारी में, देश के प्रत्येक सेक्टर से दिल्ली के लोगों का आभार मान रहे हैं। आप देखिए किस प्रकार से आज़ादी दिल्ली के लोगों को आज मिलने जा रही है, उसकी खुशी यहाँ बैठे हुए लोगों में भी दिख रही है। मैं सबको अभिनंदन देता हूँ। मोदी जी के एक नेतृत्व में दिल्ली में आने वाले दिनों में डबल इंजन की सरकार एक नया इतिहास बनाएगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। खास तौर पे આજે अन्ना हजारे કહ્યું કે હું અરવિંદ કેજરીવાલ સત્તા ભૂખ્યા હતા, જે સત્તા પચાવી ન શક્યો। લોકોએ લાલચમાં આવ્યા વિના મોદી પ્રત્યે વિશ્વાસ અને ભરોસો રાખી મતદાન કર્યું। ડબલ એન્જિનની સરકાર બનવાનો ફાયદો દેશના લોકોએ જોયો। લોકોને પીએમ મોદી પર પુનઃ વિશ્વાસ મૂક્યો। લોકોએ પીએમ મોદીની લીડરશિપ પર વિશ્વાસ કરે છે, જેને કારણે આજે દિલ્હીની ચૂંટણી જીત મેળવી। ભાજપના કાર્યકર્તા અગ્રણીઓ સૌનો આભાર માન્યા। મીઠાઈ વડે એકાબીજાનું મીઠું મોઢું કરાવી દિલ્હીની ચૂંટણીનો ભવ્ય જીતની ખુશી વ્યક્ત કરી। સી આર પાટીલ સહિતના નેતાઓએ મીઠાઈ વડે એકાબીજાનું મીઠું કરાવ્યું। બ્યુરો રિપોર્ટ, હિન્દ ટીવી ન્યૂઝ, સુરત।